एमएस पेंट मो यस सर। एमएस पेंट ओपन करके सपोज मते गोटे किछि पार्ट मते दरकार मते डॉक्यूमेंट रे दरकार मैं ठीक कोन करियो सपोज फाइल न्यू कंट्रोल भी ओके ये कंट्रोल भी मानले से जो फोटोटा हमें पेस्ट करले आसे स्क्रीनशॉट है प्रिंट स्क्रीन मारियो ओके सर डेस्कटॉप रे कोन प्रिंट स्क्रीन मारिबा तुमरो जो स्क्रीन टा तुमको प्रिंट करिवार अछि जेंति हमें तमे यस सर। मोबाइल रे स्क्रीनशॉट नोचो जो पार्टा यस तम सर। दरकार एठी प्रिंट स्क्रीन मारियो कोन सर सेटा लैपटॉप जदी अपन तो एटा लैपटॉप रे करछन यार माने डेस्कटॉप अछि हम डेस्कटॉप रे भी सेही प्रिंट स्क्रीन मारिबा सबथरे प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन तमर थिबो लैपटॉप रे थिबो डेस्कटॉप कीबोर्ड रे सबुठी प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन थिबो बुझिला तो करछन एटा माने को वर्जन रो अछि कि एमएस पेंट ता सर एटा वर्जन ता कोन अछि वर्जन किछि नै माने वर्जन कम पे पचार सर आपण जोटा करिक देखिले हमर डेस्कटॉप ता अछि एक्सपी वर्जन रे तो सर मु ता आधर कला को केतेटा आइकन सब माने अलगा सब शो करछि तो सर सेही पई पछन माने एमएस पेंट रे तो किछि असुविधा होन ना एमएस पेंट तो सब सेम सर आइकन्स किछि डिफरेंस शो करू अच्छा मते पठेले देखिया स्क्रीनशॉट ना मोबाइल पठेले देखिया सर एबे मु करिकने पठेइ देबी आपण अच्छा हो ठीक है एटा होची विंडो 10 तमे एक्सपी माने बहुत पुराना वर्जन माने आउ एक्सपी अब चालून बुझी होची ये सर सेटा बहुत पुरानाटा अछि हां तमरो सेटा को आइदर विंडो 7 कर दियो ना 8 कर दियो ओके सर सर हमर वर्ड ता जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सेगुडा को सब 2007 रो अछि मु पढेबी 2013 न ताले मु तुमको सॉफ्टवेयर टा दे दे हमें सेटा को इंस्टॉल करियो जेतले मु वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढेबी 2007 एबे चालुनी एबे आसीलानी ऑफिस 365 ऑफिस 365 माने एबे 2013 चलिबो और 365 चलिबो बुझी होची यस सर
पट्टा करे ଆମେ ପଢିଥିଲେ कंप्यूटर मेमोरी जे लिखिलो ना यस सर सर क्लासेस ऑफ मेमोरी जाए लिखिथि so first we go for register memory এটা পড়া হয়েছে register memory is a smallest and fastest memory in the computer सबुठारो small और first रहता है it is not part of the main memory এটা main memory रही न थाए it is in the CPU from the register which are all the smallest data holding element a register temporarily hold the frequency used data instruction and memory address data to be used by the CPU माने computer startup हवा पाई जो information दरकार लाइक कांटेक्ट जो हमरो टाइम डेट एगुड़ा का शो करिया पे जो इंफॉर्मेशन दरकार एटा हमारा रजिस्टर मेमोरी स्टोर हो ऑल डाटा is required to pass through the register memory before it can be processed so there can be used by the CPU process and data is entered by the user okay तो देखो register memory विजेस माने एटा हम कंप्यूटर गोटे पार्ट एना थाए हमर जो कंप्यूटर रा स्टार्टअप पई जो प्री इंस्ट्रक्शन दरकार एठी यूज हो ओके cache memory is a high speed memory which is a small size but faster than the RAM the CPU can access it more quickly than the primary memory so it is used synchronized with the high speed CPU and improve the performance cache memory can only be accessed by the CPU it can be reserved part of the main memory or storage device outside of the CPU it holds the data and program which are frequently used by the CPU so it makes sure that the data is instantly available CPU चलिबा पई ओके CPU चलिबा पई जो प्री इंस्ट्रक्शन सब दरकार
एटा हमर कैचे मेमोरी रे स्टोर बुझिला. In other words, if CPU find the required data or instruction in the cache memory, it doesn't need to access the primary memory. So thus, by acting as a buffer between RAM and CPU, it speed up the system performance. So basically, it is used to speed up the system performance. System performance को speed up करियो. बुझिला कैचे मेमोरी. जोड़े जिनसरा पाकर दियो. माने घर घरे जदि किसी जिनिस अवेलेबल रहिला तो चीनी हमको बार बार किनिया दरकार तो घर आमे जे डब्बा रोणी के अभी यूज करते हैं बुझिला. Main primary memory hold only those data and instruction on which the computer is currently working. Okay, so that's a limited capacity and data is lost when power is switched off. Okay, so main memory is what like जेतबे हमरा डेटाटा से कंटेन करिवो बट जेतबे स्विच ऑफ हे जिवो हठात हमरा लैपटॉप टा बंद हे गला किबा कंप्यूटर रो पावर पळेला हम जहाँ भी डाटा रखी थी सेटा पड़े जो. Okay, so it is generally made up of semiconductor device. These memory are not fast as a register. The data and instruction required to be processing reside the main memory. It is divided into the two subcategories, RAM and ROM. Characteristics, these are semiconductor memory. It is known as main memory, usually volatile memory. Volatile माने कहाँ होगा? Data में loss ही जाई पारे. Data is lost in the case of power is switched off. It is the working memory of the computer, faster than the secondary memory. A computer cannot run without the primary memory. Okay, primary memory टा को काट देले computer run होगा. Okay. पूरा next is RAM. So RAM stands for random access memory. Okay, so it is a hardware device generally located on the motherboard of a computer. The motherboard it acts as an internal memory of CPU. It allows CPU to store data, program result when the switch on the computer. It is the read and write memory of the computer, which means the information can be written to it as well as you can read it. RAM is a volatile memory, which means it doesn't store the data or instruction permanently. Information ta permanently ରହିବ. So when you switch on the computer, the data and instruction from the hard disks are stored in the RAM. When the computer is rebooted and when you open a program, the operating system and program are loaded into the RAM, generally from SSD and SSD. CPU utilize the data to perform the required tasks. So the data remain in the RAM as long as computer is on and lost when the power is turned off. So on hour data ରହିବ, turn off ହେଇଗଲେ data ପଳେଇବ. Okay, so that is the working process of RAM. RAM ର actually work होची हमर जो application अछि से application से काम करियो करले जो memory जो instruction जो दरकार it is RAM रे store. Okay, right it. तो जो HDD SSD तो सेगुना को कौन